extremely sorry. मैं IIT गया था, IIT Mumbai, तो both ways. I've just been in the car. We've been waiting to interact with you. So I know many of us already know him well. But he, as we all know, is from Mumbai and he's been active in politics for the last 28 years. He's risen to his position from grassroots level by sheer hard work. He is from a family that has been close to Guruji, those who have heard the name, Atalji, Advaniji, and many national level senior leaders since Jansangh time. Jansangh came before BJP came, so in case you are not aware. He is currently a member of Rajya Sabha and was earlier the national treasurer of the BJP. He headed the BJP's Information Communication Campaign Committee and oversaw the publicity and advertising campaign of the party for the 2014 general elections. He has had a brilliant academic record, and Anurag, he also is a chartered accountant and second rank holder in law from Mumbai University. He was a well-known investment banker and he has advised top corporates on management strategy and growth. He is acknowledged as one of the most efficient and dynamic ministers in the present government by media and experts in the field of governance. So we will hear him for about 40 minutes and we will have I want to hear them rather. मेरे तो बहुत speeches सुन के थक गए होंगे. Up to you. And I think it's a bit more interactive. That will be more fun, and I can always respond to what are real issues of interest. And so I may be speaking at tangent, and you all may have some other things in mind. But at the outset, my apologies for being phenomenally late. Not just late, but it's been pouring out there, and I had to go to IIT Mumbai for a very interesting program, and I'll share with you about that. And the route both ways was completely jammed. We tried both routes. We went via the Sakinaka route, which was bad. On the return, we came by a Sam. So both sides don't look to be the best of days. My apologies. I did ask whether you want to cancel it. Considering that I'm so late. But thank you for waiting, and great to hear about this initiative, Ashokji. The very fact that these young boys and girls are taking interest, I wish there were more girls taking interest also. ऐसा तो नहीं है कि सन का काम सिर्फ आदमी और लड़कों तक सीमित रखा है आपने. पर अभी हमारे फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी में तो बहुत ज़्यादा महिलाएं थी, आदमी कम थे. तो आई थिंक और इनको तो और इन्वॉल्व करेंगे तो as they say, the women power takes the message deeper and faster to the society. I would urge all of you, okay, as a humble request, get your wife or somebody in your family who is interested to come with you next time or next time onwards. Because वो लोग फिर उनकी kitty parties, not necessarily सब लोग kitty parties में जाते हैं, but I think it's a great networking tool also. They'll spread the word, they'll be able to talk to people. और कई बार मेरे स्वयं का अनुभव है और ये जानते हैं अच्छी तरीके से पंड्या जी के जितना काम मेरी वाइफ कर सकती है समाज के दृष्टिकोण से उतना समय मुझे नहीं मिलता. तो maybe a good idea if the younger boys can get their girlfriend. और सन में कोई टैबू तो नहीं है ना. पर अच्छा लगता है देख के कि आज की नई युवा पीढ़ी को भी इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में. यू नीड वन सेट every first Thursday. Very good concept. But great. Actually, I can keep talking as much as you want. We are almost paid to talk. Of course, ये अलग बात है कि lunch मैंने गाड़ी में खाया था on the way to IIT Mumbai because I thought time बचाऊं, लेकिन
I literally had my lunch in the car. So I had khichdi, dahi and carrot on the way, and I was desperate for a cup of tea. Abhi tak mila nahi hai all through the afternoon, but I believe I'm getting some tea. So it's good. There's no free lunch both ways. आपने तो अपना नाश्ता तक कर लिया पहले. But great feeling that having completed 2 years now in government, we feel that the nation is moving on the right track. कई बार इस 2 वर्ष में ये सुनने में आता था कि, और हम काफी लोग यहाँ पे व्यापारी समाज के हैं, बिजनेसमैन हैं. The general conversation was, yeah, a lot of announcements, a lot of talk being done, but we don't feel that on the ground. Haven't you heard that? Yes, yes, very much. Maybe you felt that also. We're still doing that. So there's this general sense of, there's nothing happening on the ground. We don't feel that impact on the ground. व्यापार ठंडा है, दुकान पे लोग कम आते हैं. And we've discussed this in the cabinet several times. Because obviously we get this feedback and then we discuss this feedback to see how we can do better and make changes wherever required. हमारे सामने 2 पर्याय थे जब सरकार में आई, और इस विषय पे कई मौके मिले जब इसको हमने फ्लैग ऑफ किया कैबिनेट के सामने कि इसको रिकंसिडर किया जाए. लेकिन I must tell you to the credit of Prime Minister, he has been steadfast in his commitment to what I am just going to say. एक पर्याय था कि हम quickly shortcut फटाफट कुछ solution निकालें, एक feeling of prosperity सबको लगे जल्दी से, and it's not very difficult. सरकार में बैठे आप नोट छापो, fiscal deficit और macro economic की ज़्यादा चिंता ना करते हुए, महंगाई की ना चिंता करते हुए आप एक सेंस ऑफ प्रोस्पेरिटी बहुत जल्दी दिखा सकते हैं, पर वो ऑलवेज शॉर्ट लिव्ड होगी. इट कैन नॉट बी सस्टेनेबल. आई अर्ज यू टू लुक बैक टू 2008 पोस्ट लीमन क्राइसिस. इंडिया वेंट इनटू द मोड ऑफ क्विक फिक्स सॉल्यूशंस एंड वी ऑलमोस्ट increased our fiscal deficit from 2.9% to 6.1% within a year. The budget 2008 had stipulated 2.9%, and revised budget of that year made it 6.1%. मैंने इतना ड्रास्टिक कभी भारत के इतिहास में नहीं. और अगर आप याद करें तो 2008, 9, 10 वो एक ऐसा पीरियड था जब बहुत प्रोस्पेरिटी का एहसास था सभी जगह, और उसका जो लॉन्ग टर्म डैमेज भारत को हुआ, be it in terms of double-digit inflation, be it in terms of high interest rates, a very weakening fiscal deficit, revenue deficit being high, current account deficit went as high as 4.5%. उसका जो long term impact भारत की अर्थव्यवस्था पे, इकोनॉमी पे पड़ा, उसके कारण कई वर्षों तक, और अगर मोदी जी और इस सरकार की ये नीतियां नहीं होती इसको कंट्रोल करने की, तो ये सिलसिला could have almost taken us down the path to a banana republic, where people would lose faith in the very existence or the very ability of India to manage its economy. We chose not to do that. We decided against it, even at a political cost. ये जो sense of disconcert या nothing happening on the ground is really politically not the best way to run a government. But we still chose the path of fiscal consolidation. We still decided we'll try and work through systematic and sustainable improvements, which don't work for 1 or 2 years, but give you the hope, decades of prosperity for this country. मेरा पर्सनल अनुमान है कि आप इस वर्ष या अगले वर्ष तक we should inch towards double-digit growth, which we can actually sustain for maybe 2 or 3 decades going forward. Something like what China did from 84 to 2014, 3 decades of continuous and literally fast-paced growth and prosperity. और वो संभव है, और भारत में वो चाइना से बेटर किया जा सकता है.
दो तीन कारणों से। एक, हमारे पास युवा शक्ति है जो चाइना के पास इतनी बड़ी मात्रा में नहीं थी। दूसरा, हमारे पास रूल ऑफ लॉ है जो चाइना में नहीं था, डिक्टेटरशिप था। कई लोग उसको नेगेटिव मानते हैं, मैं उसको पॉजिटिव मानता हूँ, क्योंकि डिक्टेटरशिप के किए हुए ग्रोथ का आज चाइना भुगतान कर रहा है। The kind of climate change problems, the kind of pollution problems, the degradation in society, the kind of bad habits that the youngsters in China have played are absolutely, मतलब घृणा आती है सोचने के वहां की नई पीढ़ी किस प्रकार से आगे काम करेगी, किस प्रकार से अपने समाज की व्यवस्था बनाएगी। भारत में क्योंकि we have family traditions, family value systems, coupled with the rule of law, my own sense is our development will be more sustainable, more honest, and will also be more clean in terms of environment. अगर कोई रियल एस्टेट का है तो अगर एनालॉजी लो तो चॉइस था कि एक 3-4 मंजिले की बिल्डिंग बनाए या एक स्काईस्क्रेपर के लिए तैयारी करें। 3-4-5 वर्ष की प्रोस्पेरिटी वर्सेस 100 year prosperity. You're taking the country out of the historical baggage that we had, and we chose the land. और आप सब समझ सकते हैं कि अगर आपको स्काईस्क्रेपर बनाना है, पहले तो खड्डा भी बहुत डीप डिग करना पड़ेगा। Can't make a skyscraper on a small foundation. खड्डा डीप डिग करोगे तो कचरा भी बहुत निकलेगा, तो कचरा भी निकालना पड़ेगा। कचरा भी निकाल के किधर रखना पड़ेगा या उसका भी यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा कि उस कचरे को भी कैसे ठिकाने लगाए। सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वापस कचरा कोई लैंडस्लाइड नहीं आ जाए, वापस कचरा नहीं आ जाए, वो भी तैयारी करनी पड़ेगी। फाउंडेशन अच्छी बनानी पड़ेगी, प्लान करनी पड़ेगी, डिजाइन अच्छा होना चाहिए, उसका रोबस्ट डिजाइन होना चाहिए, नहीं तो कीमत लग सकती है, फिर से पानी अंदर जा सकता है, फाउंडेशन वीक हो सकती है। फाउंडेशन हैज टू बी डिजाइन वेल, प्लान वेल। फाउंडेशन अगर आप 10 साल में बनाओगे तो जो एक्सपोज सरफेसेस है वो रस्ट हो जाएंगे, फाउंडेशन फिर लीक हो जाएंगे। तो यू हैव टू डू इट in a compressed time frame, समय सीमा में सब काम होना चाहिए। This time to give you the thinking of this काम। As you rightly pointed out, अभी भी फील हो रहा है तो बहुत ज्यादा समय भी नहीं है हमारे पास, इम्पैक्ट भी आना चाहिए। देश बड़ा है, 125 करोड़ लोगों का देश है, तो जो काम कर रहे हैं वो बड़े स्केल पे कर रहे हैं, जिसका लाभ 125 करोड़ लोगों तक पहुंच सके। 125 करोड़ लोगों को तैयार करना है समाज में आत्मनिर्भर बनने के लिए, टू स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, टू बी इंडिपेंडेंट, नॉट बिकम अ पैरासाइट टू सोसाइटी, नॉट बिकम अ लायबिलिटी टू सोसाइटी, बट बी एन इंडिपेंडेंट एम्पावर्ड ह्यूमन बीइंग, मेंटेन आवर फैमिली वैल्यू सिस्टम्स so that in the rush for economic prosperity we don't lose sight of human happiness or human prosperity or human development. Today the world is moving towards HDI, Human Development Index, from economic growth. Gradually you are talking of happiness index also. In some sense, दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कल्पना रखी थी कि व्यक्ति विकास सिर्फ पैसे से नहीं हो सकता, it's a 360-degree holistic development. That is the responsibility of government and society. And this all cannot be done by the government alone. जब तक हम सब जो प्रधानमंत्री टीम इंडिया की कल्पना करते हैं, जब तक हम सब इसमें सहभागी नहीं होंगे, सब हम इसमें इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं महसूस करें कि देश का भविष्य, समाज का और हमारे गरीबों के भविष्य में मेरी भी जिम्मेदारी। अगर बिजली हमारे घरों में 24 घंटे आए और 5 करोड़ घरों में 1 मिनट भी नहीं आए, वो समाज कभी लंबा अरसे तक प्रॉस्परस नहीं हो सकता। 150 डिस्ट्रिक्ट्स में आखिर माओवादी नक्सल मूवमेंट क्यों डेवलप हुआ? इट्स अ साइन ऑफ आवर वीकनेस इन आवर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इट्स द साइन कि वेस्टर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया में डेवलपमेंट रैपिड हुई,
ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट नहीं हुई, वहीं पे वो पूरा बेल्ट है नक्सलवादी का। Why I'm saying all this is this government has focused its energies to prepare a systematic framework, to prepare the ground which enables India to grow not for 1 year, 2 years, 4 years, 5 years, but decades of prosperity. Somebody may think कि बहुत सारे कार्यक्रम लेने हैं। अगर आप इसको सोचें, ये सब जितने हमारे अनाउंसमेंट्स या कार्यक्रम हैं, एक तरीके से एक माला के रूप में बनते हैं। होलिस्टिक प्रोग्राम, each one has an element which is interlinked with the other. You name any of our programs, स्वच्छता। स्वच्छता is not just about cleanliness या आपने कचरा उठा लिया। स्वच्छता has huge dimensions of health. स्वच्छता has huge dimensions of climate change or the environment in the future. Swachhata in some respect has dimensions of clean mind and body and soul also. Make in India, it's got huge dimensions of India's security. आपको पता नहीं, आप तो कई लोग यंग हैं यहाँ पे, 62 वॉर में, चाइना के वॉर में, we didn't have spare parts for our soldiers on the battlefield to run their vehicles or bullets to fire from their gun. Because the Americans didn't support us. Was it Pakistan war or was it China? China. It's same thing happened in 71, but Pakistan was a much weaker country, so we could still with that policy. But what I'm trying to tell you is, Make in India is not just that you're trying to make in India. It's not as if you're trying to reinvent the wheel. You're encouraging FDI, you're encouraging technology transfer. हमारे संघ के कई लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने एफडीआई खोल दिया डिफेंस में, अलग अलग सेक्टर्स में। आई थिंक अब हमारी गलती है, चर्चा शायद इनफ नहीं हुई, पर क्या हम इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट रहे और जॉब्स वहां क्रिएट करें, वो ज्यादा अच्छा है, या उनको लाने दें यहाँ पे टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट करने दें जिससे भारत में बनेगा और अपने कंट्रोल में रहे। कल युद्ध हो तो वो लोग सप्लाई नहीं रोक सकते। सॉवरेन राइट है कि हम कोई भी फैक्ट्री में जाके गुड्स बना के यूज कर सकते हैं इन इवेंट ऑफ एनी नेचुरल और नेशनल कैलेमिटी और क्राइसिस। तो शायद समझने की और हमारे समझाने की कमी रही कि बात अपने संघ परिवार में भी ठीक से समझ नहीं पाए कर सकते। बट यू नेम एनी प्रोग्राम, स्किल इंडिया, इट्स एन एफर्ट टू स्किल एंड मेक एवरीबॉडी एम्प्लॉयबल, stand on his own feet, become independent, become on his own livelihood, independently, honestly, be an integral and important part of Indian society. And you name any program, I can keep go on and on, power for all. अब बिजली जैसी चीज तो I am sure you all appreciate, हर एक का अधिकार है कि बिजली तो मिलनी चाहिए 24 घंटे, उस पर तो कम से कम कोई दो राय नहीं हो सकती। So you look at the whole bouquet of programs and you'll find there's a lot of intermingling in all. Make in India cannot happen without power for all. Skill India cannot happen unless we have better education systems. Because basic education ठीक होगी तो skilling ठीक होगी। But सिर्फ education पे dependent हो तो सरकार या बड़े कारखाने जॉब सबको नहीं दे पाएंगे। स्किल इंडिया से यू आर एम्पावरिंग पीपल टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। मुद्रा योजना, lakhs of crores will be given for people to stand on their own feet, maybe run a tailoring shop, a beauty parlor, carpentry, masonry, a dhaba, chai ki dukaan, security services, all sorts of services that help to develop employment opportunities for each person. So all these programs that this government has initiated, Digital India, can you imagine today the power of technology? How we can leverage technology to reach the fruits of development to the last man at the bottom of the pyramid fastest. So each of these programs are a part of a holistic vision, which vision may take a little time to roll out. But I can promise each one of you
that this government stands committed to ensuring the well-being of 125 crore people. It's not about the well-being of one section of society. Our fight against black money, ultimately black money may help a lot of us in this room also. But that tax cut saved is ultimately eating into the vitals of Indian society, is also affecting government programs to reach welfare to the poorest of the poor, and is obviously also resulting in higher tax rates. So if you need 100 rupees, if everybody pays their taxes honestly, you could possibly do it with 20% tax. But if 20 people are going to steal or some large taxpayers are going to steal, you may not be able to do it with 30%. So honest people then pay a premium for being honest. So the effort is on every dimension. Look at holistic development of every individual. Look at sustainable development of the nation. Plan for a developed superpower which can stand in the community of nations with pride. Prime Minister's international visits, many of us also do a lot of international visits, are all aimed to create confidence in India, get back that confidence in India. मैं ईमानदारी से बोलूँ, I'll finish here. I'll finish by giving you a last example of my own experience of Paris, where we've gone for the climate change negotiations, COP21. Narendra ji was there for exactly 24 hours. Prime Minister spent 24 hours. He reached on 29th evening at about 9 o'clock, left back for India 30th evening at 7. But to my mind, I have never seen anything like this in my 50-year life, what I saw in those 24 hours. Every world leader literally queuing up to get even a small audience with the Prime Minister. I remember at one point the translator had gone away to the washroom. Israeli Prime Minister Netanyahu landed up there unannounced. He had no appointment in that lounge and said, I need a few minutes with you, Prime Minister. There was a little flutter because you need the translator. Prime Minister is comfortable now with English. You say that enough, including the last address the US Congress. But protocol wise you need to have a translator. कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जो by chance नहीं आता है तो उस परिस्थिति में भी हमने मीटिंग की. I will take the translator. So I sat next to him. जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि conversation पूरी comfortably Prime Minister ने कर लिया किसी ने. But literally that was the level of engagement. Usi time I think Nawaz Sharif and he also bumped into each other. That was an unplanned. Literally we were walking and he was walking and crossed each other and then sat down to chat. Uska yaar itna bawal nahi. But उस period का एक incident बोल के अपने बात को विराम दूंगा बिना interaction. Prime Minister Modi was to have a bilateral with Obama and Prakash Javadekar and I were apart. उसी दिन Japanese Prime Minister requested for time and for a bilateral. Back देता तो ओबामा की मीटिंग को 15 मिनट रिशेड्यूल किया 4 से 4:15 और शिंजो आबे साहब को मिले प्रधानमंत्री ने. प्रकाश और मुझे कहा कि तुम वो यूएस मीटिंग के लिए जाके you wait for them so that अगर विलम्ब हो तो you can be there. हमारे कोई मीडिया में था नहीं इसलिए उसकी इमेजेस और सब कैप्चर नहीं हुई और शायद यूएस मीडिया से हमको इमेजेस मिलेंगी नहीं. यूएस मीडिया बड़े पैमाने में था. दिस वाज द अमेरिकन साइड ऑफ द होल पैवेलियन जहाँ पे नेगोशिएशंस हो रहे. हम लोग 4:15 पहुंच गए वहाँ पे प्रकाशन में. एंड नॉर्मली ऐसे में होता है कि प्रेसिडेंट ओबामा वुड बी इन अ होल्डिंग रूम till President Prime Minister Modi comes and then he'll come out and then shake hands and the meeting will start. Americans are a little informal. पहले सेक्रेटरी कैरी बाहर है और प्रकाश और मेरे साथ तब पे बात की तो 5 मिनट बाद प्रेसिडेंट ओबामा आ गए. So we were Prakash, Obama, Kerry and I standing in a passage. रूम जिसका मीटिंग होनी थी अंदर था. हम पैसेज में खड़े हैं. We should have
the number of shutters that went, the clicking of cameras, the videos that were taking us from about 30-35 feet away was phenomenal. मतलब बात करते करते वो disturbance थी. For the 30 minutes that the four of us chatted, and Obama literally had his hands on us like this, trying to appeal to us that look, India has to lead the world. It will be India which will take the world out of this mess. And प्रधानमंत्री की मीटिंग शिंजो आबे साहब के साथ पूरी लंबी चली 4:45 तक. That was my छापली छाती. आईटी में आज सम्मानित करने गया था. कुछ यंग प्रोफेसर ने 1 मिलियन सोलर लैंप्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, खासतौर पे ट्राइबल एरियाज और गरीब घरों में जहाँ पे अभी तक बिजली नहीं है. मॉडल अच्छा बनाया है, 500 रुपए का लैंप. वास्तव में जिस स्टूडेंट को बिजली नहीं है, जरा केरोसिन लैंप में जो लुमेन्स आते हैं उसकी स्टडी की तो इट वाज फाउंड टू बी बिटवीन 10 to 20 लुमेन्स. और उसमें तो पढ़ना मतलब एक तरफ से धुआं भी अंदर लेना और आंख भी खराब करना. पर बच्चों को आज इच्छा रहती है कुछ बनने की तो पढ़ना चाहते हैं. उस केरोसिन लैंप से पढ़ने वाले 10 लाख बच्चों को एक तरीके से इन्होंने लैंप पिछले 2 वर्ष में कैंपेन चला के दिया. 500 रुपए के लैंप में 120 रुपए बच्चों से या परिवार से लिए. फ्री में बांटी हुई चीज की इज्जत नहीं होती. 180 रुपए केंद्र सरकार ने दिए हमारे विभाग में, नवीकरण ऊर्जा विभाग, और 200 रुपए उन्होंने CSR से दिए. ऐसे 10 लाख लैंप उन्होंने बांटे थे. 1 मिलियन सोल्स सौर्य ऊर्जा SOUN सोलर ऊर्जा लैब, सोलर ऊर्जा लैब, सोल 1 मिलियन सोल प्रोग्राम उन्होंने रखा था. मैं काफी प्रभावित हुआ उससे. उसमें थोड़ा समय भी ज्यादा लगा देखने उन्होंने कैसे किया. और पूरा प्रोजेक्ट उनका स्किलिंग का था कि लोकल ट्राइबल महिलाओं को या गरीब महिलाओं को स्किल करते थे, उनसे ये असेंबल करवाते थे और वो जाके इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से वितरण करते थे. तो पूरा प्रोजेक्ट में मेरे को दिलचस्पी भी हुई. तो मैंने उनकी कल्पना की कि अगले 3 वर्ष में हम 10 करोड़ घरों तक हर ऐसे गरीब के घर में एक लैंप कम से कम हो जाए जिससे उसको केरोसिन में ना पड़ना पड़े. केरोसिन लैंप मैंने उनको आज कल्पना दी है कि इसको 3 वर्ष के बदले 1 वर्ष में किया जाए, स्केल अप किया जाए थोड़ा फास्टर. एक छोटा मोबाइल चार्जर ऐड किया जाए उसमें, सो दैट वो अपना मोबाइल भी चार्ज कर सके. हो सके तो इल्यूमिनेशन थोड़ी बढ़ाई जाए या बैटरी साइज बढ़ाई जाए. तो आज उसमें चर्चा में भी विलम्ब हो गया, पर अच्छा लगा मुझे वो प्रोग्राम. और अगर हम सब युवा युवती यंगस्टर्स ऐसे कुछ कॉजेज के साथ जुड़ जाते, मैंने उनको कल्पना दी है कि 10,000 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को निकाला जाए. 3 दिन की टोली में 3,000 साढ़े 3,000 ब्लॉक्स देश भर में जहाँ वास्तव में बिजली की समस्या ज्यादा है, उधर वो जाए, लोकल लोगों को ट्रेन करें, मुद्रा बैंक से लोन दिलवा दें और वो एक लोकल एंटरप्रेन्योर खड़ा हो जाए या एक सेल्फ हेल्प ग्रुप खड़ा हो जाए तो ये असेंबल भी करे, बांटे भी, इसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी काम करे अगले 5 वर्ष के लिए. कुछ ऐसी अगर योजनाएं बनती है और उसमें हम लोग सब जुड़ते हैं, हमारे रोटरी क्लब, लायंस क्लब, संघ की अन्य संस्थाएं, तो मुझे लगता है कि truly we can engage with society and give back to society to make a difference in their lives. That's what I have experienced. Now, any questions? Yes. Brief, quick. थैंक यू सर. अभी आपने आईआईटी की जो बात की, हम आई एम अशोक जादव, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सेलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड. और अभी जो आपने आईआईटी की बात की उससे 3 गुना प्रभावी प्रोडक्ट लेके हम आपके मिलने आए हैं. एंड अभिषेक, एक्सप्लेन अबाउट Good evening, sir. I'm Abhishek Soran.
Basically, the lamp that you were talking about, soul lamp, we have a product with us that is actually 3 times, I would not say better, but 3 times more powerful than the product. It has got the mobile charging power bank facility in it. It has got a 3-watt illumination. At the same time, it has got a 5200 mAh battery in it, which is actually more than 3 times the soul product. Very good. It can give an illumination for around 15 hours on a single charge. And the charging algorithm is... cost? Its cost, the prototype that we have made is costing somewhere near between 1,000 rupees. As it scales up, it can cost a bit less. Actually, the battery can be made smaller. That will be the main cost differential. 3 watt is not a problem, but you don't need 15 hours. Even 8-hour battery is enough. Bharat mein sun bahut hai. Yes, 8 hours battery is enough. The 15 hours battery backup can be reduced, will be reduced if the illumination goes up. If it is used for a different purpose other than only reading. Reading normally is when keeping the lamp on the side. That way it can be used only for reading. But if you require it for another purpose, for an illumination for an entire room, it will be requiring a whole more illumination level. That during that time the battery requirement goes. I fully agree with you. Like I have told Dr. Solanki the same thing. That we must add more illumination at that mobile charger. And my own sense is cost won't go up much once you scale it up. आपका तो अभी prototype cost है. अगर 10 करोड़ की बात करें, I don't know if you all are aware कि LED bulbs जो सरकार 310 रुपए में खरीदती थी 2014 तक, ये सरकार वो 7 वॉट का LED बल्ब 310 में खरीद के और टैक्स वैक्स मिला के 500 में बेचती थी और शायद सब्सिडाइज करती थी। आज वही LED का 9 वॉट बल्ब 30% more illumination. This government is purchasing at 54 rupees 90 paise without any compromise. Who are our suppliers? Philips, Crompton Gates, Surya, Usra, and all AAA companies are supplying that. ऐसा नहीं कि कुछ कचरा लाके सस्ता लाके जनता को दे रहे। और जो 2013-14 में 6 लाख बल्ब एक साल में देती थी सरकारी कंपनी, तो गवर्नमेंट को हर बार गाली देना बहुत आसान है, गवर्नमेंट कभी भी अच्छा नहीं काम कर सकती। 6 लाख बल्ब एक साल में ESL बेचती थी, आज के दिन 6 लाख बल्ब रोज बेचती। That is the scale. But I'd love to know more about it. Otherwise, Wednesday दिल्ली आ जाओ. If this product will dovetail all projects. यहाँ पे कोई क्या बोलते हैं पैटेंट नहीं है. अपने देश की सेवा करनी है, जो बेस्ट हो सकती है वो करनी है. Basically, this is a product. We'll discuss that bilaterally. That should be important. Hi, I am Aditya Kiria. You are the best performing minister in this government. सब झूठ है और newspaper वालों की figment of imagination. So, I would like to know your experience or learning in Harvard. How has that really helped you? No, I got for a 3-year program, the OPM. You know that You were here for Harvard first year. I know after the first year I couldn't continue it. But even that 21-day first year module was extremely useful. My ESL, the same editing program, draws a lot from the negotiation that Deepak Malhotra taught. So I told Deepak that I met him last in May. I was joking with him that पढ़ाई में बहुत काम है। देखिए पढ़ाई कभी भी नुकसान नहीं देती है, पढ़ाई तो हर एक चीज में काम है। I did law, I never practiced law, but I think it was one of the most important studies that I did in my life. CA also, in some sense, is helping me a lot in my work today. तो पढ़ाई तो मैं समझता हूँ सबको, it should be a part of our life for our entire life. It could be as simple as reading a novel. It could be as simple as reading some management book, some interesting spiritual book, God knows. Any reading that we do, any learning that we do, will always help us do our work better, to not only be better citizens of this country, but serve our society better. मैं समझता हूँ हम सब ने और हम सब जो थोड़े मिडिल एज हो गए हैं,
हमको तो अपने आप को रीओरिएंट करने के लिए एक बार और you should get back to school again. Sir, Mayank Singhania. I am into both steel and solar panel manufacturing, so I am both on the generation side as well as the consumption side of it. First thing I would like to congratulate you, sir. 50% of the villages that did not have electricity in 2014 have now gotten electricity, so first congratulations for that. Second thing, sir, I believe कोई आपका statement था जिसमें you had said that we are moving towards a situation where we can have one tariff for the entire country. And now the government of Maharashtra has introduced a very strange policy in which geographically you have different tariffs for different industries, for the same industries. So in such a situation, it becomes very difficult for people like us. I'll respond to that. The one tariff throughout the country was not meant in terms of the consumer tariff. हमारा एक app है, you can all have a look at it sometime later. It's called Vidyut Prabha. This Vidyut Prabha app gives you the availability of power at all times of the day, 24 hours, and the price at which power is available. VIDYUT Vidyut Prabha, PRAVAH. It's available on all these stores. Now the idea behind that one tariff throughout the country was one price, not one tariff. One price throughout the country was that at any point of time, देश में जहाँ भी बिजली की रिक्वायरमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट उसको अवेलेबल हो उसके लिए खरीदने कि वो जनता को ये एक्सक्यूज ना दे सके कि मेरे पास बिजली में कि इससे आपके घर में 24 घंटे बिजली नहीं। अभी जैसे अभी के समय दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, उधर ₹2.80 है। ये 8:30 से 8:45 कम के It's now 8:35 in your watches, I believe. हर 15 मिनट ब्लॉक पे प्राइस ये पावर एक्सचेंज से डिस्कवर होती है। दक्षिण में ₹2.62, ईस्ट में 2.62, सिर्फ पंजाब में 3.32 है। पूरे देश में पंजाब में ₹3.32। That means वहाँ गर्मी पड़ी होगी, आज बारिश नहीं हुई होगी। I can tell you the weather literally from this. वहाँ बारिश नहीं पड़ी होगी, गर्मी होगी और सोइंग शुरू कर दिया लोगों ने जब पिछली बारिश आई तो पंप चला रहे होंगे बिजली निकालने, पानी निकालने, और गर्मी में एसी चल रहे होंगे धरहर। पंजाब इज द ओनली प्लेस जहाँ ₹3.32। दक्षिण में बारिश आ गई है लगभग समय, इसलिए 2.62 है। वैसे आपकी जानकारी के लिए दक्षिण में हिस्टोरिकली 4 गुना प्राइस होता था नॉर्थ से। दक्षिण में जनरेशन भी कम थी और ट्रांसमिशन बहुत कम। In the last 2 years, we have done focused effort. ये अलग बात है कि हम चुनाव नहीं जीते दक्षिण में। And very often people say that good economics doesn't necessarily mean good politics. But anyway, we are not bothered about that. We are focused on good economics and serving the people. We have added transmission by about 70% in 2 years. अगले 2 साल में और 80% आएंगे on an increased base. So 170 के ऊपर 80% आएंगे और उसके अगले 2 वर्ष में another 80%। जब मैं मंत्री बना था दक्षिण में जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी थी, by 2020 we will make it 5 times in 6 years. That's the level of focus we are doing wherever there is a problem. So we do a root cause analysis and then prioritize the work that we have to do, so that for future long term the problem can be solved, not just short term problem solving. I need to take this call, I guess. You will understand. Sanjay ji, hello. You know that girl who passed away in Bangladesh? हेलो, आज संजय जी, जो लड़की की डेथ हो गई ना बांग्लादेश उसकी फोटो ना दें कोई, आपकी कोई भी एडिशन, फैमिली को थोड़ा सेंसिटिव भी है, जैन फैमिली है
और लोग सब मीडिया वाले फेसबुक वगैरह से निकाल के उसकी फोटोज बना रहे हैं, थोड़ा इट्स इन बैड टेस्ट। वैसे हमारे यहाँ कोई कानून तो है नहीं प्राइवेसी लॉ, बट हमने सबको रिक्वेस्ट किया है इस गवर्नमेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द फैमिली कि कोई उसकी फोटो ना दे, तो सब चैनल से भी अपने सब एडिशंस को तो फोटो ना दे, और लिखना हो तो लिखते हैं कि टू एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आवर प्राइवेसी का नॉर्मल। थैंक यू सर। Hello sir, it's an honor to have you here with us. Hi, I'm Gaurav Agarwal. We're into manufacturing of module mounting structures for solar power plants and development of solar power plants. You like to choose the people. But it also reflects that suddenly this sector has a lot of traction. Interest. My question comes from two of the most popular initiatives that the government has taken. One is the renewable initiative with focus in solar. One of the first steps was to revise the target from 20 gigawatts to 100 gigawatts. And the second is, of course, Make in India, which you've also spoken a lot about. Well, most of the components going in a solar power plant today, almost 80% is being imported from China. In the last 1 year, China has commissioned 21 gigawatts with 100% make in China. And India has commissioned close to 7. In fact, this year 7 is a target rather, and that will take us to 17 gigawatts in totality. But with hardly any making. Exactly. And that's typically stemming from the tax policies and the custom duties. Typically, because we give 100% exemption there, excise, VAT, service tax, everything levied on manufacturers here makes it impossible to compete. Today, steel itself over there is so much cheaper. And now with anti-dumping duty coming in, domestic steel prices go up by 30%, 40%, whereas import of finished steel products has no duty. So typically, it's now people don't import steel from China, they're importing a finished structure straight away. A simple example, India can boast of having the world's largest single location solar power plant, which is the 648 megawatts which Adani is commissioning in Tamil Nadu. About out of 26,000 metric tons of steel that would have gone into that plant, 18,000 tons of steel was imported from China, whereas only 8,000 was sourced from India, purely because of the excise duty laws. I just want to know, is the government taking initiatives to ensure that Make in India can move forward with better tax laws? Because if 100 gigawatts is achieved in 5 years, there will be about 4.8 lakh crores, which will boost the Chinese economy. Good, very good point, man. Clearly, we want to go to 100 gigawatt and we are working on that. And as regards the Make in India, I'm very conscious of it. Only it's a chicken and egg story. Unless we go for large scale development, nobody will come and make it. Because if you see the status of all the manufacturers, they're all in deep problems. Right? And all India has today is a 1 gigawatt capacity in cells and possibly now 3 or 4 gigawatts in modules. अब मैं वेट करूं कि पहले मेक इन इंडिया होगा तो करते करते उतना ज्यादा और एनवायरनमेंट को पोल्यूट करूंगा। सेकंड, मेक इन इंडिया कभी स्केल पे आएगा ही नहीं, क्योंकि मेरे टारगेट से बहुत छोटे हो गए। अगर कैपेसिटी 1 गीगावाट है, मुझे टारगेट भी छोटा रखना पड़ेगा। 1 का 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे इम्पोर्ट नहीं करना है। ये भी स्वदेशी जागरण मंच को एक चिंता थी, तो मैंने ऐसा ही एक सेमिनार किया, उनको समझाई ये बात। तो मेरे डिपार्टमेंट की तो आलोचना नहीं की गुड कॉन्वर्सेशन। जब मैंने समझाया तो उनको ध्यान में आया कि जब तक हाई लेवल का यहाँ डिमांड नहीं होगी, तब तक कौन मूर्ख आके इंडिया में इन्वेस्ट करेगा मेक इन इंडिया के। सो टुडे माय फोकस इज लेट द डिमांड गेट जनरेटेड। फॉर यू देयर इज गुड न्यूज। 2 चीजें, सितंबर तक एक प्रोटोकॉल है सिंगापुर में साइन हुआ, जिससे हम ड्यूटी नहीं लगा सकते सोलर इनपुट्स में। वो जब लैप्स होगा उसके बाद फिर रिव्यू करेंगे किस प्रकार से डोमेस्टिक और प्रोटेक्शन देना। पॉइंट 1। पॉइंट 2, and in the finishing stages of finalizing a policy
by which I'll be giving nearly 30,000 crores to invest and set up 5 gigawatt of manufacturing capacity annually. ये भी बड़ा modest है, पर उसमें कल्पना ये है कि मैं bid करूँगा 500 मेगावाट के projects, integrated projects end to end, अलग से bid करूँगा for silicon manufacturing, क्या लगता है silicon chips है कुछ, वो 12,500 tons का एक unit को bid करेंगे. We'll ask people to bid and whoever is the best bidder will win that contract. He will set up that manufacturing and we will take 500 megawatt के plant से for first 2 years 375 megawatt each year and next 5 years 250 megawatt each year. तो total लगभग 2000 megawatt का assured business के साथ है. तो bidding के time पे ये पूरा package में bid हो, investment in manufacturing and ये 2000 megawatt देने में क्या subsidy उसको चाहिए. ऐसा composite bidding करके I'm trying to put out near 30,000 crore rupee program to encourage domestic manufacturing. मेरा अनुमान है कि एक बार 5 gigawatt इंडिया में बन जाए और बनना शुरू हो जाए तो बाकी manufacturing will be able to stand on its own feet. तब तक economies of scale, domestic technology expertise सब आ जाए. So we will non-solar वाला question raise करेगा तो प्लीज वो पता चलेगा आप ही लोग हैं. Hello sir, Hemant Kabra from Rahamatna Group. We are into electrical industry. So we supply a lot of electrical industry all over. We are the largest exporter of cables. Yes. So we supply a lot of to the transformer industries and a lot of industries in terms of power industry like ABB, Siemens and BHEL, all those people. But sir, all of a sudden in the last 2 years we have realized that they have sale, but they don't have cash flow. The cash flow is becoming so bad over the period that their vendors overall are bleeding and they are not getting payments since last 6 months, and so because government payments because power grid is not paying them, maybe NDA is not paying them, maybe some specific expenses or details that I can address that issue. It's not a difficult issue. Right. So पैसे की कमी नहीं है इनका. Like we understand that, but that's the actual practical scenario into the. Please give me more details अगर आपके vendors or those हैं, specific details that will sort it out. And one more point which I would like to put in, that we are talking about renewable energy, but all of a sudden right now in Gujarat, if you see there is a capping of 1 megawatt solar plant. You cannot put any solar plant above 1 megawatt for the capping. ये इसका मैं आपको बताता हूँ, इसका मेरे सामने भी गंभीर समस्या है. And I share it with you in some sense also. It answers your question. I should have given that part of the answer also. इस देश में हर एक कंज्यूमर को एक टैरिफ होना बहुत ही गलत है. We have a serious problem of poverty in our country. We have a serious problem of farmer distress in our country. और ऐसी परिस्थिति में अगर गरीबों को सस्ती बिजली दी जाती है या किसानों को सस्ती या मुफ्त की जैसी भी बिजली दी जाती है, मैं समझता हूँ कोई गलत नहीं होगा. They deserve it. The poor of India deserve to get reasonably priced and affordable electricity. The farmers already are under a lot of severe stress and strain. अगर उनको थोड़ी एक सहूलियत दी जाए कि अच्छी बिजली मिले, हाँ, we should focus on more energy efficient pumps. Focus on drip irrigation. See if we can get better canal systems and irrigation. तो बिजली कम लगे, पानी वेस्ट कम हो, उस पर फोकस करना है. लेकिन अगर उनके लिए कुछ क्रॉस सब्सिडाइज होके इंडस्ट्री को या हमारे जैसे लोगों को बिल में थोड़ा हायर टैरिफ देने पड़े, तो आई थिंक वी शुड bear that burden of the cross for the disparities in this country. Having said that, we are focusing on reducing the transmission and distribution losses and wastage. That is the larger part of the problem. अगर आपका 10 रुपए यूनिट है, तो उसमें 3 रुपए यूनिट तो चोरी और AT&C losses की वजह से. There will be a part of it also because of inefficiency of generating power or distribution or a large number of employees in the discoms and all. We are trying to tackle that one by one. So hopefully in the years to come we won't see very large tariff increases.
but I'm also trying to talk to the states to reduce the complications in the bill. If you can have 6 or 8 or 10 heads, this bill. Geographical could be because of losses. I'm encouraging states कि जहाँ पे लोग 100% बिल पे करते हैं या पावर कैन बी आइडेंटिफाइड कि कहाँ यूज हो रहा है और कितने का पेमेंट हो रहा है, encourage them with lower tariff or full 24 hours power. और जहाँ चोरी ज्यादा होती है उधर पावर कट करो, उधर उनको लोगों को मैसेज दो कि आप बिल पे करोगे पूरा तो आपको 24 घंटे मिलेंगे. तो एक आध जगह तो ऐसी हालत है कि अगर ये हाईवे है, एक तरफ 24 घंटे मिलती है, एक तरफ 12 घंटे. इट्स अ मैसेज फॉर देम. वो देख के वहाँ पे ईर्ष्या होती है कि हमको भी 24 घंटे चाहिए. तो होपफुली लोग थोड़े विसल ब्लोअर्स बन के चोरों को पकड़ने में. Also, last thing I would like to spend 10 minutes because we have 10 developed, minutes. maybe later, that we have developed a product which can help approximately 4% of the India's power consumption to be raised down. To reduce. Write me a mail and send it to me. Sure, come and meet me sometime. I have another engagement after this. Correct question. Piyuji, my name is Chand Keraina. You are undoubtedly the best performing minister, one of the best performing ministers, and I have a first-hand experience. I come from a place called Jammu, and I was there a couple of days back, and when people started, discussing about the government performance, my aunt, who is 70-year-old, she said, "Oh, say anything about anyone, but don't speak anything about Piyush Goyal. It has been wonderful." After you arrested all those transmission losses and other things in that particular city, the power cuts have actually reduced just 10% from 60% 70%. And thank you very much for that. And usually looking at performance and looking at your profile, I did some amount of research, looking at you from Princeton, Yale, Also leadership program. chartered accountant, and Short. yeah, I am aware of that. But I see you, constantly and consistently sharpening your star. Don't you think that the performance and this practice are correlated? And does this send a strong message to every politician in our country, and at least tell the rest of the population in our country that see how a politician should be? And this is one of the important parameters which should be there while we go ahead and choose. Something I can say. Usually my name is Rishabh. Recently I'm also from the solar EPC background, but I want to ask a question about solar. So my question is, lately we've been seeing a lot of inequality globally, and that's leading to a lot of populist political movements, right? You see Trump, you see Brexit. And in India, that phenomenon, I'm not sure if it's there yet, but inequality is definitely there. So while the government and the 1% or the top level of the educated people may appreciate fiscal deficit measures that you're taking, may appreciate all the top level measures, and while we may have the foresight to see 5 or 10 years down the line, these measures today will be helpful. Are you in any way scared that 3 years later, when the election is there, some opportunist politician, or he may come and he may just play on those inequality measures, and he'll just say that okay, the government has done fiscal deficit measures and all of that, but is that really helping the person? It's a fair point. We'll have to balance good politics with good economics. We can't be foolish about our work. I agree with you. We have to balance, and that's why, for example, farmers के लिए अभी जो इंश्योरेंस स्कीम निकाली है, भारत में 70 वर्ष में कभी भी फार्मर्स को 100% कॉम्पेंसेशन नहीं मिला है लॉस में, और इस बार हमने इंश्योरेंस स्कीम में सिर्फ 1.5% खरीफ में और 2% रबी में इंश्योरेंस प्रीमियम पे 100% इंश्योरेंस वी आर पुटिंग इन फ्रॉम गवर्नमेंट में भी 10,000 crores. ऐसे एक कार्यक्रम, और इतने भी फुलिश नहीं है मोदी जी, आप लोग सब लोग हमको चुनाव जीतना है. तो आई एश्योर यू के यार, और ये सब इसलिए जरूरी था कि जब तक ये नहीं करो फिजिकल कंसोलिडेशन के कोई हम गांव में नहीं जाते, भाषण नहीं देते.
तो क्योंकि इस ऑडियंस में था मैंने उसका जिक्र किया। वो मेरा भाषण बहराइच में या गोरखपुर में वो नहीं होता है। वहाँ पे हम योजनाओं की बताते हैं क्या हो रहा है, क्या आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है। अब मेरे एलईडी प्रोग्राम में 40,000 करोड़ के बिल घटे थे जनता के, पैन इंडिया 40,000 करोड़ एवरी ईयर। तो उस ऑडियंस को वो बात जचती है। मुद्रा योजना से लास्ट ईयर 1.25 लाख करोड़, इस साल 1,80,000 करोड़ बढ़े। छोटे छोटे उद्योग में तो ऑटो रिक्शा करो बिकम्स ए जोन। आपको पता है जो रिक्शा चलती है, रिक्शा का किराया जो साइकिल रिक्शा होती है रोज का 30 से 35 रुपए रोज का। ये नई रिक्शा 8-9 हजार रुपए में आती है। एक प्रकार से व्यक्ति एक नई रिक्शा का पूरा पैसा एक वर्ष के अंदर देगा। ब्रांड न्यू रिक्शा का पैसा हर वर्ष व्यक्ति देगा। और मैं मंत्री बना उसके पहले मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। अब कोई आप लोग में से ले तो इसको आई विश वी कैन मेक इट अ नेशनल प्रोग्राम। मुझे समय नहीं मिल रहा है। एक अपने लॉयर है राजस्थान के जयपुर के, उनके ट्रस्ट ने इस पर काम भी किया है। आई गॉट इन्वॉल्व विद इट, बट आई हैव नॉट बीन एबल टू टेक इट टू द प्लान विजन। इस देश में आज भी 25 लाख लोग ये रिक्शा चला, साइकिल रिक्शा। गाँव में तो ये चली। हम लोग पूरी टीम गए जयपुर, हमने वर्ल्ड सिटी में एक्चुअली वी इंटरव्यू दिस रिक्शा पुलिस। अधिकांश मुसलमान थे भाई, अधिकांश पश्चिम बंगाल, आसाम, उड़ीसा उस तरफ के बॉर्डर एरिया से लोग आके ये रिक्शा चलाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पूरे बैक में वो बैक समरमत से बॉयल्स फेफड़े हुए रहते हैं। Whole back was full of ugly boys. He was very interested in the heat. So I got into a conversation. एक आया आदमी फ्रेड एकदम पतला सा, किसी को उतार के लाया तो महिला ने 5 रुपए का कॉइन उसके हाथ में दिया, 100 का कही। तो मैंने उससे बात शुरू की, कहाँ से आए, उस स्टेशन से आए, कितने दूर, 1.5 किलोमीटर, कितना किराया था, 5 रुपए। ऐसे दिन में कितना लेते तो डिपेंड्स, कभी 100 रुपए, कभी 150, बहुत अच्छा दिन हो तो कभी 200 भी होता है। तो फिर क्या करते हो, 30 या 35 रुपए आते हैं, कितना उसने कहा मैं साहूकार को देता हूँ जिसकी रिक्शा, और फिर उसको रिक्शा छोड़ के आता। 20-25 रुपए मुझे लगते हैं दिन में खाना खाने में। एक ही मील खाता हूँ, एक आध बार चाय पीता, 4 रुपये, और कभी 100 रुपए, कभी 50 रुपए जो बचते हैं वो इकट्ठा करके गाँव अपने घर में, उससे किचन चलता है, रसोई उससे चलती है। 2000 से 2500 रुपए महीना देता हूँ। वहाँ पे कोई काम नहीं है, खेती है नहीं, खेत में काम करके मेरी भाई जितना कमा लेती है थोड़ा कमा लेती। बच्चों को पढ़ने के लिए, माँ बाप को कोई स्वास्थ्य तो कोई सवाल नहीं। मैंने कहा कितनी चलाते हो साइकिल? 150 किलोमीटर एवरेज चलती है, क्योंकि कई जगह एक बार छोड़ने के बाद एंटी चलाते रहना पड़ता है गिराक ढूंढने के लिए। कई बार रात को चलानी पड़ती है अगर पैसा इनफ नहीं हुआ तो उसमें सो जाते हैं। रहते गाँव फुटपाथ पे, सवारी नहीं होता है फोल्डर्स में। तो यार रिक्शा के लिए खरीदे थे, 8,000 रुपये में नहीं मिलती। कहाँ हमारे पास कहाँ पैसा है? बैंक देती है, दिया एक स्कीम है 2-3% पे भी मिल सकता। 8,000 रुपये तो कुछ भी नहीं है। आपको साथ देखो, आपको बैंक में कौन उसने देगा? नुकी धोती कुछ पहनी नहीं है, नहीं होता। वास्तव में उस शक्ल को देख के तो सिक्योरिटी वाला ही उसको हटा देगा वहां से। मैंने कहा अगर हम आपको हेल्प करें बैंक में जाने के लिए, साथ वो 2,000 रुपये मांगते हैं हमसे, कहाँ से आएंगे 2,000? और हमारे लिए कौन जागीरदार है? मुद्रा योजना की कल्पना ऐसे सब अनुभव से ही बनी। नो गारंटर, नो सिक्योरिटी। जस्ट इमेजिन राइट, वी कैन, अगर वो 8,000 रुपए का लोन मिल जाए तो his savings annually will be 10,000 rupees more, which he can use to fund his maybe his children's education or his parents' health. वैसे और इसको आगे नहीं तो जी टीवी या कोई उसको एडवर्टाइजमेंट के रूप में भी ले सकता है। यूनिलीवर, डाबर, whatever, they can advertise
ऑन द रिक्शा 100-200 रुपये महीना और मिल सकते हैं ना। ये प्रोग्राम बनाया जा सकता है, आप लोग करो, ये नासिक मिलन का प्रोग्राम हो सकता है इस ग्रुप का। और फिर हम अपने पास कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारे सबके ऑल इंडिया कॉन्टैक्ट्स हैं। हम एक मिशन मोड में, और एक पैसा नहीं लगेगा किसी का, कोई CSR की जरूरत नहीं। रिक्शा का 100% पैसा मुद्रा योजना से हम दिला सकते हैं। कोई जामीनदार की जरूरत नहीं है, वो रिक्शा ही कोलैटरल, नो कोलैटरल इज द सिक्योरिटी। 12%, ये तो 8,000 में तो शायद 10% हो ब्याज होगा सालाना, आज वो 10% हर महीने देते हैं। एंड वी कैन देन आल्सो लेवरेज हिज थिंग टू हेल्प हिम गेट सम एडवर्टाइजिंग। हम उसको पेंशन में जोड़ सकते हैं, उसको कुछ सेविंग्स में से इंश्योरेंस स्कीम दिलवा सकते हैं 12 रुपए की, और कभी एक्सीडेंट हो जाए, कोई गाड़ी वाला रिक्शा वाला मांगे, कम से कम परिवार को 2 लाख रुपए हो जाए। कोई कार सडनली डेथ हो जाए तो 2 लाख की 330 रुपए सालाना की इंश्योरेंस दिला सकते। कुछ चीजों में हम जुड़ जाए तो मिशन मोड में अगर पड़ जाए ना देवा जी, तो 1 साल में इस देश में इन सबको आत्मनिर्भर बना सकते। 1 साल लगेगा आपको। जो शक्ति इस रूम में है, मैं सिर्फ इस रूम की बात कर रहा हूँ, इस रूम का हर एक व्यक्ति अगर इसको पीड़ा समझते हैं तो हमको 25 लाख लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। आगे चल के तो ई रिक्शा हो सकती है, थोड़ा बहुत सोलर पैनल हो तो, या बैटरी हो, थोड़ा साइकिल पैडल करने के बाद उस पर बैटरी में चल सकती है, तो आप उसके ऊपर बर्डन भी कम करो। पर बाय द वे, ये जो रिक्शा है ना, मैंने वो टायर देखा था, बोल्ट कम से कम 25 साल पुरानी बाबा आदम के जमाने की रिक्शा थी, वो जो 35 रुपए में लेगा। वो जो टॉर्क था उसका, इट मस्ट बी टेरिबल, कितना प्रेशर लगता होगा उसको साइकिल करने। मे बी सम गुड विल कम आउट ऑफ इट। वो केवल सवाल सुनील, और बाद में एक मिनट चलो सुनील। I am Sunil Saxena, government exporter. I got factories in Gujarat, and a lot of states in India they claim we have got 24 hours power, 365 days power. That's true. Even in Gujarat they claim that. For past 20 years I am seeing they claim that the power is 100%. But what happens is every now and then, because of all bad maintenance, the power keeps going. थोड़ी हवा चली, बारिश आई, पावर जाता रहता है. उसके कारण से फैक्ट्रीज, सब फैक्ट्रीज को बहुत बड़ा लॉस है. पूरे साल में आई डोंट नो कितना बड़ा लॉस होता होगा. हवा चली, मेंटेनेंस. गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जैसे गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उसको कोई पड़ी नहीं थी उन्हें इंजीनियर्स की, सोच रहे कि पावर तो उन्हीं से लेना पड़ेगा, पर कंपटीशन है नहीं. और यहाँ पे तो जैसे रिलायंस, टाटा वगैरह काफी मेंटेनेंस पे ध्यान देते हैं. तो अभी वो कैसे इम्प्रूव करेंगे ये टाइप के जो मेंटेनेंस इश्यूज हैं, और पावर होते हुए भी पावर जाती रहती है, उसको कैसे आप टैकल कर रहे हैं? ऐसा है कि बहुत क्लियरली दिस इज अ प्रॉब्लम, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम भी है और बहुत पुराना भी हो गया, इट नीड्स अपग्रेडेशन. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, इन दोनों के तहत हमने 1,11,000 करोड़ रुपए टू अपग्रेड द डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स बनाए हैं. केंद्र सरकार डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर सकता है, राज्य सरकार के थ्रू ही करनी पड़ती है. तो ये संघीय ढांचे में, फेडरल स्ट्रक्चर में इट्स अ स्टेट के कंट्रोल का सब्जेक्ट. एक तरफ से हम उस पर फोकस कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये चोरी रोकना और AT&C लॉसेस कम करके इन सब डिस्कॉम्स की हेल्थ सुधारनी. आज तो उनको तनख्वाह देने का पैसा नहीं है, इससे टैरिफ्स भी बढ़ते जा रहे हैं, और एक जोक हो गया कि एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ बिजली खरीदेंगे तो उनका लॉस और बढ़ जाएगा. तो जितनी कम बिजली खरीदो उतना लॉस कम होगा. गिविंग नो पावर is better than giving power, because you give power, losses will go up. I am trying to change the rules of the game so that every unit of power they sell gives them a return on their purchase, and they are encouraged to increase power sales. So again, go to that Vidyut Prabha. The idea behind Vidyut Prabha, and if you get into Gujarat or UP or Bihar, punch that, मतलब just press that map के ऊपर UP, तो आपको UP की स्थिति आ जाएगी कि कल क्या पावर मीट की उन्होंने डिमांड, कितनी शॉर्टेज रिपोर्ट की, कल क्या दाम पे उनको बिजली मिल रही है, कल कितनी बिजली करेगी. मेरी कोशिश है कि अगर जनता को हम एम्पावर करें विद नॉलेज, विद इंफॉर्मेशन, तो जनता के प्रेशर में वी गेट बेटर परफॉर्मेंस ऑफ दिस कंपनीज. अल्टीमेटली हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे
तो परफॉर्मेंस बेटर कभी नहीं हो। मैं चाहता हूं कि जनता इस पे आवाज उठाए, तो इससे एक नेशनल टोल फ्री नंबर भी कर दिया 1912। अधिकांश स्टेट्स आ गए, 2-4 स्टेट्स अभी आने बाकी है, पर आई थिंक गुजरात है, महाराष्ट्र है। 1912 पे हर कंप्लेंट को आई एम गोइंग टू हैव इट रिकॉर्डेड, पुट ऑन द वेबसाइट, उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट डालेंगे। एंड जितना ज्यादा अकाउंटेबल ठहराओगे आप हमें और हमारे सब व्यवस्था को काम के लिए, आप हमारे काम को मॉनिटर करिए, हमें अकाउंटेबल ठहराइए, तो हमारा काम उतना सुधरेगा। आप अगर चिंता नहीं करें तो काम कभी सुधरेगा नहीं। तो ताली दो हाथ से बजे। आप सबको इसके विषय में और ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब तक 125 करोड़ लोगों में ये भावना नहीं जगे कि आई वॉन्ट टू डिमांड बेटर सर्विस, या मेरे बाजू वाली फैक्ट्री बिजली की चोरी कर रही है तो मैं कंप्लेन करूंगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा कि वो उसकी मुसीबत है या लाइन्समैन की मुसीबत। और आपको बता दूं, चोरी गरीब आदमी नहीं करते। सबसे बड़ी समस्या है इस देश की, जो 30% आज लॉसेज हो रहे हैं देश में, ये गरीब आदमी नहीं करते, ये हम लोग करते हैं। I'm not pointing any finger at any individual, पर अमीर लोग चोरी करते हैं। और उसके दो बहुत सिंपल आंकड़े, मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया है कुछ महीनों से। इस देश का हर गरीब जितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं, हर गरीब 100%, उसकी टोटल 100% बिजली भी अगर चोरी होती हो तो 5% नहीं होती इस देश की कमाई, 5%। सेकंड, चोरी करने के लिए समझो 100-200 का किसका तेल आता है, वो क्या तो चोरी करेगा और क्या लाइन्समैन को रिश्वत देगा जिससे वो चोरी पे पकड़ेगा नहीं है, तक नहीं करेगा। 100 रुपए 200 रुपए वाला के भरोसे थोड़ी लाइन्समैन चोरी हो रही है। वो तो जब स्टील इंडस्ट्री चलती है और इंडक्शन फर्नेस बिजली खाती है तब मजा आता है। 2-4-5-10 लाख रुपए की सेविंग करो, लाख रुपए लाइन्समैन को दो। एंड वो इससे भी जरूरी होती है क्योंकि तुम्हें पूरी चेन चलानी है। अदरवाइज बिजली की कंजम्पशन से एक्साइज वाला पता कर सकता है कि लोहा कितना बड़ा, 700 यूनिट पर टन स्टील लगनी है, तो आपको अगर चोरी करनी है तो एंड टू एंड सोल्यूशन आपको स्क्रैप भी चोरी में खरीदना पड़ेगा, लेबर रिकॉर्ड्स में भी चोरी करनी पड़ेगी कि लेबर को भी नहीं पीएफ और ईएसआईसी दो और रिकॉर्ड कैश में पे करो। बिजली की भी चोरी करो, नहीं तो वहां पकड़े में आ सकते हो। तो इट्स चोरी करने, दैट इज व्हाई वी आर अटैकिंग ब्लैक मनी रिलेंटलेसली। एंड सिंस आई एम हियर आई अर्ज ऑल ऑफ यू, पुराना जो हुआ जैसा हुआ, ये विंडो है कंप्लायंस विंडो 30 सितंबर तक। पुराने सब पाप को दे दो, डाल दो बैंक में पैसा, चैन की भी नींद सोओगे। और ये पैसा एक्चुअली आज के दिन में ब्लैक मनी पे ब्याज भी कम मिलते हैं। आई टोल्ड 2-3% भी कमाई करते हैं। चेक के पैसे पे कमाई भी, तो इवन आफ्टर पेइंग द टैक्स दैट मनी हैज मोर वैल्यू, यू कैन अर्न बेटर रिटर्न्स ऑन दैट। और शान से जियो, शान से खर्चो, शान से तो मेहरबानी करके जिसके भी पास हो या अपने अपने फ्रेंड सर्कल में encourage people to use this compliance window. After that, we want to see a clean India. Piyushji, my name is Devraj Jatia. I am a tech entrepreneur and an angel investor in early stage startups. On my recent visit to China, I noticed that there is a Baidu, there is a Didi, and these companies today in China are doing so well to WeChat. Anti-dumping and protectionism has been adopted by the government for years. Now, how can today a Snapdeal or a Flipkart, where they're not deep pockets, compete with a company like Amazon that's pumping in $3 billion into the country, compete? Is the government going to adopt protectionism in the e-commerce space? It's a very good question, young man, but we have been grappling with it. If you have some good ideas, suggestions, let me know. Our concern is that even if we put in any controls or stop them, all of these have almost moved out of India and have housed their headquarters in Singapore. Now, space is free, internet is free. For us to put a crackdown on them is not going to be possible in this environment. We are not like China. We can actually even block internet or block Google. Once those tools are available, when there was talk about e-commerce companies being put under some regime, control regime, I am told most of them have moved their ownership to Singapore.
In fact, now we don't even get the benefit of taxes on the deals that they are doing with angel investors or private equity funds. And controlling that is going to be extremely difficult in this free world. What I personally believe is ये burnout हो जाएंगी ये these models of predatory pricing and low cost loss making systems. Ultimately, they will have to connect with the local retailers and the small kirana stores and the shops, corner stores for the last mile delivery. My own sense is gradually you will see many of them moving into a model where they will be taking the orders but executing them through the local stores. Because I suspect it's not going to be easy for India to move to a model where literally the large stores are having large stockyards and are moving out material in large volumes across the country. And India market is very different. It's not a market where you can say, okay, 100% cash back if you return the goods. Because I think one or two companies have now withdrawn that. They realize that everything is coming back. But sir, there have been companies, there have been instances where I've seen people, delivery boys coming with 10 kilo dumbbells in their backpack. People are trying it out and sending it back because of this delivery. आस्ते आस्ते ये burnout होता है.